आपका क्वेश्चन मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ. ओके. मेंबर्स आर सेइंग जिसको सनस्क्रीन लगाना है या शीट मास्क लगाना है वो किस स्टेप पे लगा सकते हैं? Okay, so for sheet mask is more like a serum. So आप cleansing कर लो, toning कर लो, and then you use a serum. Sometimes you don't want to use a toner along with sheet mask, so you skip the toner और आप अपना sheet mask use कर सकते हो. Then move on to your moisturizer and eye cream moisturizer. The way it is basically eye cream और moisturizer से पहले आप use करोगे, क्योंकि consistency जो होती है sheet mask में जो serum होता है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली होती है एज कम्पेयर टू अ मॉइस्चराइजर और एन आई क्रीम, तो वो उनसे पहले लगेगा. आई एम श्योर एवरीबडी नोज द लेयरिंग ऑफ स्किन केयर. स्किन केयर की लेयरिंग की कंसिस्टेंसी पता है ना, सबसे पतला फिर उससे थोड़ा थिक, सबसे थिकेस्ट होता है आपका सनस्क्रीन. दैट्स व्हाई इट गोज सबसे लास्ट लेयर में. सो सनस्क्रीन गोज राइट आफ्टर द मॉइस्चराइजर बिकॉज उसकी लेयर सबसे थिक होती है. ओके. निशी सिंह आप एक बार अगर हाथ पे स्ट्रोक करके दिखा सकते हो अबाउट द आई पेंसिल. क्या करना है मुझे? स्ट्रोक करके ऑन हैंड्स. शी on वांट्स. hands? Yes, absolutely. Okay, I'm gonna do it on my back of my hand. Let me just see. This is the size of the pencil point. It's very thin, right? So जब हम stroke कर रहे हैं, कैसे आपको दिखाया जाए? ऐसे क्या आप देख सकते हो? This is the front of my eyebrow, straight ऊपर की तरफ. जैसे कि मुझे निदा की आईब्रोज दिख रही हैं, वो बहुत बुशी है, तो निदा को बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस निदा ने फिल करी हुई है ये ऑलरेडी, राइट? सो माय फर्स्ट लेयर गोज स्ट्रेट अप स्ट्रोक्स, थिन, वेरी थिन. इससे भी थिन बना सकते हो और थिन बना, ठीक है. एंड देन इट मूव्स थोड़ा कर्व के साथ आगे, एंड आई एम डूइंग इट विद वेरी लाइट हैंड. And then it's going downwards, so my stroke also will go downwards, something like this. Okay, and then I'm going to use a spoolie to fix everything, to make sure that it's all even and it's all filled nicely, right? Pencil ka naam hai Anastasia Beverly Hills. This is the thin version, not the thicker version. The shade is dark brown. यस, लास्ट में प्रोडक्ट लिस्ट मिलेगी. मैं साथ साथ भी भेज रही हूँ जो जो प्रोडक्ट्स अभी तक यूज हुए हैं. Okay, this is what my eyebrows look like for now. Yes, absolutely. मैंने कल ही यूज किया था, अगर नहीं किया होता तो मैं आज यूज कर देती. बट हाँ, मैंने आप बिल्कुल, मैं अपनी ब्राइड्स पे फेशियल रेजर यूज करती हूँ इफ इट्स रिक्वायर्ड. उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फाउंडेशन की बाद में. बट प्लीज डोंट पुश पीपल. अगर कोई एलर्जिक है, किसी को नहीं करना है, तो उसको ना करने दो. आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने स्ट्रोक और ब्लेंडिंग कैसे करोगे फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन से, अगर किसी ने हेयर नहीं हटवाए हैं और वो फेशियल हेयर प्रोमिनेंट है. बेस्ट रेजर बॉम्बे शेविंग कंपनी का बहुत अच्छा है. आई हैव फ्यू हियर. आई कैन, yeah, I think I mostly use from the Bombay Shaving Company. All right, let me show you. दो टाइप्स आते हैं उसमें. एक ये है आपका सीधा रहता है ऐसे ही स्ट्रेट, इसका ब्लेड इस तरीके का है आगे से. इसका क्या हो गया, तो मैंने कुछ भी लगाया ऊपर. ओके, द अदर वन कम्स लाइक दिस. दिस इज व्हाट आई लाइक बेटर, क्योंकि ये बहुत हैंडी है, बहुत इजीली यूज हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ब्लेड भी थोड़ा बड़ा है, सो इजियर टू यूज. जब आप फेस पे यूज कर रहे हो, अभी मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है यूज और मैंने अपने प्रोडक्ट्स लेयर कर लिए हैं. बट जब आप यूज करते हो, आप अपने फेस को लिफ्ट करेंगे, ठीक है? स्किन लिफ्ट होती दिख रही है आपको? स्किन लिफ्ट किया एंड देन इसको ऐसे नहीं पकड़ेंगे कभी भी, नीचे ब्लेड डाउन पकड़ेंगे, पुल द स्किन एंड इरेज द हेयर. ठीक है, जहां भी कर रहे हो आप, यहाँ कर रहे हो, पुल द स्किन एंड डू इट. ठीक है, फोरहेड पे कर रहे हो, पुल द स्किन एंड डू इट. स्किन को हमेशा पुल करेंगे, नहीं तो कट पड़ जाएगा. और कट नहीं डालना है, आराम से करो. टोनर स्प्रे कर लो. टोनर जब आपका जो भी आपने कॉटन पैड से लगाना है, कॉटन पैड से लगा लो. वो लगाने के बाद करेंगे. पीएच
बैलेंस आपका स्किन का होना चाहिए, that's when you'll use it, not on very dry skin, otherwise you'll end up putting a cut. All right, so after this I'm going to make the base for my eye. For my eyes I'm going to use a concealer which is from Tarte Shape Tape. This is Tarte Shape Tape in the shade light medium. CTM कर लिया है मैंने रिजवाना. Okay, my name of my concealer is light medium. This is by Tarte Shape Tape one. So I'm going to use it with a flat brush. आपको एक सिंथेटिक, जब आप कंसीलर यूज करते हैं तो आपको एक सिंथेटिक ब्रश की जरूरत होती है. सो दिस इज द सिंथेटिक ब्रश दैट आई एम गोइंग टू यूज. इट्स अ फ्लैट ब्रश फ्रॉम PAC. द नंबर ऑफ द ब्रश इज 347. Members are saying any budget products they can use, any concealer in budget. Yes, absolutely you can. Just give me a minute. I'm looking for that product if I can find. Okay, got it. Here. आपके पास ऐसा ब्राइडल पैलेट और ये डर्मा पैलेट होता है कंसीलर का, क्राइलॉन का. अगर आपके पास क्राइलॉन के कंसीलर्स और फाउंडेशंस हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो. इफ यू ऑल वांट आई कैन स्टिक टू द द बजट वन, और मैं वही यूज कर सकती हूँ. व्हाट डू यू से? Budget one, just give a vote right away so that I can use Krylon. Okay, let's use Krylon. So my friend Vidya is saying yes ma'am. Okay, let's do it. Perfect. All right, so I have this foundation palette and I have a concealer corrector palette. Okay, so let's open and see the shades. जब भी आप पॉट कंसीलर्स यूज करते हो, पॉट मतलब ऐसे पैन्स में और पॉट्स में जो आते हैं वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं. वही इसीलिए बता रही हूँ राधिका. ओके, सो योर क्राइलॉन कंसीलर्स एंड फाउंडेशंस दे कम इन पैन्स एंड पॉट्स. ठीक है, या स्टिक्स में भी आते हैं. तो आप इनको ऐसे करके रब करेंगे अच्छी तरीके से, या थोड़ा सा अमाउंट अपने पैलेट पे निकाल लो एंड देन इसको एक्टिवेट करो. करो करो और करो. जब थोड़ा सा सॉफ्ट और क्रीमी हो जाएगा, that's when you'll use it on your eye. I'm using the shade D5 on my eyes. आप इसका और फेयर शेड भी कर सकते हो, बिकॉज आपका जब आई कलर में, आईज में जो मेकअप कलर जो आता है, दैट नीड्स टू पॉप जो आप आई शेडो का कलर यूज कर रहे हो. सो फॉर दैट अगर आप डार्क या अपने स्किन टोन का फाउंडेशन या कंसीलर यूज करेंगे तो क्या होगा, वो कलर इतना पॉप होके नहीं आएगा. आपको क्या करना है, यू वांट टू मेक श्योर दैट यू यूज अ शेड दैट इज नॉट वेरी डार्क. सो जैसे मेरे पास D5 है, D4.5 है और D4 है, तो इन तीनों में से मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ. आई एम यूजिंग दिस वन D5 फॉर नाउ. ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है, मतलब स्मूथ हो गया है. इट्स इजियर टू यूज. अगर ड्राई होगा, आप ड्राई करोगे, राधिका ने पूछा था ये अभी, अगर आप ड्राई यूज करोगे इट विल बिकम पैची ऑन योर आई. सो हियर I have it on my brush. I have taken it directly from this pan. You can always take it out on a palette also, like this. इसके ऊपर निकालेंगे तो easy हो जाएगा एक्टिवेट करना. Please don't get confused. I'm just using the mirror for the Krylon foundation for now. Okay. Okay, and there was a question, what skin type is this suitable for? Sorry? What skin type is this suitable for? Skin type. The Derma palette, when you're using as an eye base, so उसको आपको पाउडर से सेट करना है. This will go for all skin type. Mostly ये ड्राई रहता है क्योंकि it is for all skin type. The corrector palette. The foundation palette is different. This is the bridal ultra palette. अगर किसी की स्किन बहुत बहुत ऑयली है तो आप उस पर ना यूज करें क्योंकि ये ज्यादा केकी कर देगा आपका बेस.
Okay, so do we go for a lighter shade or a darker shade than our skin tone? We will all on your eyes you will always use a lighter shade क्योंकि आपको अपना आई शेडो कलर जो है दिखाने हैं. Other if you use darker the color will not show that nicely. Like I can go even lighter from this. इससे भी light कर सकती हूँ मैं which will be fine. So like I said D4 इसमें सबसे fair shade है so मैं D4 भी use कर सकती हूँ. Okay, so apply करने के बाद I'm using a damp sponge on my eye base to blend it all. I'm going to do the same thing on my other eye. Okay. A lot of members are saying they also have dark eyelids, so they often tend to color correct with an orange Yes. corrector. Yes. Yes, if you'd like, you can do that. Like for me, I don't have a lot of pigmentation, but अगर मेरी bride को बहुत ज़्यादा pigmentation होता है, तो I use this orange color first, and then I use the other one. You can use DFD also for them. DFD has a little orangish tinge in it. आप वो भी use कर सकते हो. But orange corrector करोगे और अपना skin color या fair color जो मैंने आपको बताया, आप वो use करोगे lids के ऊपर. For pigmentation basically. And Krylon is like a it gets thick. अगर आप उसको direct use करो तो वो thick हो जाता है, इसीलिए वो patchy भी हो जाता है. So avoid using a lot of layers. Make sure कि आप उसको अच्छे से rub करके पहले जब वो smooth हो जाएगा बिल्कुल cream जैसा, that's when you're going to use it. Dry में करोगे तो बाद में end result will be very cakey. The D5 we use is from the Ultra palette, right? No, this is on the Derma palette. Okay, हमने Ultra भी use नहीं किया कोई product. Ultra is only for foundations. I'm not going to use Ultra अभी हम कर इस पे base बनाने के लिए I'm using that concealer. Okay, okay. That's why I said don't be confused क्योंकि Ultra I'm just using for mirror. Yeah. Members are asking कि मैम Derma better है या Supra, which is better? Correction के लिए Derma better है. और अगर आप Supra ले रहे हो तो you have to remember that Supra is something that doesn't go for too oily skin. Like I said, अगर आपकी skin oily है तो Supra will not go. But Derma is something that will go on all skin types क्योंकि ये बहुत thick होता है, but उसको बस activate करके आपको अच्छे से use करना आना चाहिए. Both are equally good, but Derma is something that will be used more, जो आप ज़्यादा use करेंगे. Okay, अभी मैंने इसको blend कर लिया है. अभी जब भी हम कोई cream product use करते हैं, whenever we use a cream product, we make sure that we set it with a powder. So I'm going to use this K Beauty loose powder. It is in the shade Banana. This is what it looks like. I'm going to take it on the same blender. For people who think उनका makeup cakey हो जाता है, remember जब भी आप ऐसे powder लेंगे, you will make sure कि आप back of the hand पे इसको equal कर लेंगे, कम हो जाएगा इसमें amount. That's when you're going to put it. चाहे वो आपका अंडर आई सेट करना हो, चाहे वो आपका आई बेस सेट करना हो, जितना अच्छे से ऐसे करके लगाओगे, कम पाउडर लगाओगे, कम क्वांटिटी में, उतना बेटर है. All you have to do is, somebody said banana powder. We are not using banana powder. We are using a translucent powder in the shade banana because banana powder जो होता है वो brightening powder होता है. This is not that powder. This is the name of this shade. Okay, now my eyes are set for my makeup and I'm ready. Also for my eyeshadow today, मैं आज eyeshadow के लिए भी कोई बहुत heavy brand नहीं use कर रही हूँ. I'm using You Can Be का mirror palette. So okay, I want to tell everyone कि जो भी मुझसे अभी question पूछ रहे हैं, आप मुझसे किसी चीज के बारे में पूछ रहे हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, मार्स का प्रोडक्ट कैसा है, ऑल ऑफ दैट दोस क्वेश्चंस आप मुझसे बिल्कुल एंड में पूछोगे. राइट नाउ रिलेटेड टू दिस स्टेप, रिलेटेड टू व्हाटएवर स्टेप आई एम डूइंग या लुक आई एम डूइंग, आप उससे रिलेटेड पूछेंगे, सो दैट यू नो वी आर नॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज आई कैन टेल यू ऑल अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स, बट
The point here is that we are doing a bridal look and I want you to ask questions related to this particular step or this particular look. ठीक है? All right, this is what my palette looks like. It has all the shades of the world. And I'm going to start with a basic color. For that, I need the fluffiest brush. सबसे पहला हम जो अपनी eyelids पे काम करते हैं, पूरे lid area को cover करने के लिए मैं ये वाला brush use कर रही हूँ. This is a very fluffy brush. Looks like this. The number of the brush is PAC 028. Okay. So I'm going to take a shade जो बिल्कुल मेरे skin color जैसा हो, जो मेरा base color बनेगा. So इस side से, इस shade के नाम नहीं है, but this looks like a nude color, like a beige color to me. So I'm going to use that. I'm going to dip my brush in the pan, take off the excess, always remove the excess. And then I'm going to apply it. Holding the brush from literally, if I divide my brush into 100%, like it's 100%, मैं इसको 70% पे पकड़ रही हूँ. 30% पीछे खाली है, 70% आगे है. क्यों? इससे जो प्रेशर पड़ेगा ना जब आप यूज करेंगे, that will be minimal. तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगाओगे नहीं. You'll end up blending it well. Movement of my brush is going to be outward to inward, all over the lid, ताकि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा और आगे तक नहीं जाएगा. When you're working on your eye makeup, make sure कि आप हमेशा पीछे से शुरू करो and leave the 10% of आगे का area, क्योंकि उससे आगे तक कलर नहीं फैलेगा, which we do not want, right? So here. This is the first color that I have used all over my lid. Use a color that is close to your eye shade, like skin shade. कुछ भी nude चलेगा, neutral color. It might not show, ऐसा लगेगा कि कलर कुछ लगाया नहीं है, but basically it's going to just add a little bit of tint all over. Members want to see the color again. Yes. All right. This is the color. This one. This is like a nude shade. Beige nude, जो भी आप इसको बुलाएं, ये वाला. ऐसा सा दिखता है स्किन पे. ठीक है. आप डायरेक्ट फेयर शेड लगा सकते हो. अगर आप इतना थिक कंसीलर लगा रहे हो तो वो वैसे ही उसको कवर कर देगा. एंड आई होप आपने ऑरेंज भर भर के नहीं लगाया है. बहुत कम लगती है क्वांटिटी. जैसे कि ये मेरे हाथ में ऑरेंज कलर है ना, अगर मैंने इसको अपनी आईज पे लगाया है, द अमाउंट दैट आई हैव पुट हियर, आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट वेरी वेल सो द एंड रिजल्ट वुड लुक लाइक दिस, इवन लाइटर. इट शुड नॉट लुक पैची. इसके ऊपर मैं अपने दूसरे कलर से, फॉर एग्जाम्पल मैंने D5 यूज किया था, मैं इसको D5 से ही कवर करूंगी. फर्स्ट प्लेसमेंट एंड देन उसके बाद में आप here. Tina, what's your Sorry, yes, Tina wants. Tina is saying उनका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ. मेंबर्स जितने हम पिक कर पा रहे हैं अभी, वी आर ट्राइंग टू पिक अप द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट अर्जेंट वन. बाकी हम क्वेश्चंस एंड में अच्छे से लेंगे, as रुचि already mentioned. Yes. Okay, Tina. Sorry. Yeah, so sorry, I'll pick it up. No problem. Okay, my second color is gonna be, my second brush is gonna be this one. This is a crease blending brush by PAC number 229. It's my favorite brush. It just मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा फेवरेट ब्रश है, बिकॉज इसके बिना मेरा आई मेकअप मुझे लगता है ब्लेंड नहीं अच्छा होता है, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट फिट्स इन द सॉकेट वेरी वेल हियर. सी, दिस इज बेसिकली टू ब्लेंड द सॉकेट एरिया का जितना भी कलर है. बहुत अच्छे से चलता है ये. सो नाउ देखो, अब आई मेकअप डिसाइड करना सबको आता होगा, आई एम श्योर. नहीं आता तो यू विल लर्न इट बिकॉज वी हैव अ सेशन वेयर इन वी डू इट. नाउ फॉर आई एम वेयरिंग ग्रीन ज्वेलरी. लेट्स अज्यूम कि मेरी आउटफिट रेड कलर की है. पंजाबी यूजुअली रेड कलर का लहंगा या पिंक कलर का लहंगा पहनते हैं मोस्टली, या गोल्डन पहनते हैं, राइट? सो कंसिडरिंग दैट मेरी ज्वेलरी ग्रीन है. आप मुझे ये कलर्स अपने माइंड में रखने हैं कि मेरे पास ग्रीन कलर की ज्वेलरी है, तो मुझे आई मेकअप क्या करना है. मेरी आउटफिट रेड है. I already have green thing going on here, right?
and I already have green thing here. अभी मेरे earrings भी आएंगे जो green color के होंगे. So there's a lot of green already. So मेरा green quantity में थोड़ा minimum रखूंगी eyes पे. अगर use करूंगी तो I can go for neutral shades, I can go for reds, maroons and blacks. So basically ये सारे color जब हम use करेंगे हम इनमें tints, shades सब कुछ डालेंगे. So let's do a side contour eye look, right? So I'm going to start with a, let's see which color. Like this is more like a brownish color. Let's see which color is it. Oh, this is dark. Okay. I think I'll have to pick up another palette. I'm switching my palette because I don't have any reds here. All I have is neutrals. और मैंने neutral look बहुत सारे करे हुए. Let's take out my James Charles palette. आपके पास कोई भी palette हो जिसमें आपके पास इस तरीके के color हो, brown, red, ये type के color हो, वो आप use कर सकते हो. Now I'm using this color which is more like a maroonish color. This color for my side contour. Taking it on my 229. Tapping off the excess. Placing it. Just the placement. All right. First color, second color placement हुआ है ये भी. I'm gonna dip my brush in the pan again. Take off the excess. Going to do the same thing on the other eye. From James Charles मैंने maroon color use किया है, maroonish type color है. इसमें भी नाम नहीं है. I can show you what it looks like. Second lane में dark brown के साथ में है. This is like a maroonish, like a brick color. You can use any warm tone that is apt for red lehengas and something that will go complementary with green. All I'm doing is outer V को मैं fill कर रही हूँ इस color से, just placing the color for now. Movement of my brush, I'm holding it from like 60 to 70% पे, and then I'm taking it in, outward to inward. This is what it looks like for now. और जब भी आप आई मेकअप करें, यू वांट टू मेक श्योर कि आप एक बार स्ट्रेट मिरर में देखोगे या अपनी ब्राइड को मिरर में दिखाओगे एंड देन मिरर में चेक करोगे दैट इट्स ऑल लुकिंग इक्वल. व्हाई? क्योंकि आप नेकेड आईज से जब हम सामने से देखते हैं तो हमें कभी कभी लगता है इट्स लुकिंग परफेक्ट, बट व्हेन यू लुक इन द मिरर और इन द कैमरा आपको परफेक्शंस या फ्लॉज दिखते हैं बहुत अच्छे तरीके से. सो ऑलवेज चेक इन द मिरर दैट इट्स ऑल इक्वल और कलर डिस्ट्रीब्यूशन सही है, कलर इंटेंसिटी कैसी है, सब कुछ, इवन द हार्श लाइंस. नाउ आई एम गोइंग, अगर आपको लगता है आपको थोड़ा और इंटेंस कलर चाहिए जैसा कि मुझे चाहिए, सो आई एम गोइंग टू डू दिस अगेन द सेम थिंग एट द सेम प्लेस, taking the color, just intensifying the color a little more. Anyone who has very hooded eyes पे आप आंख को खोल करके खुला रखेंगे आंख को and then you will do it upward so that the color is visible. What can I do if I add some extra? We will, Manisha, अगर आप मेरे साथ साथ step by step कर रहे हो, you will see we are going to add more color अभी. This is the intensity increasing time. Okay, this is the color जहाँ पे मैंने intensity increase करी है, यहाँ पे अभी light ही है. So I'm going to do more, taking the color on my brush. Nancy, I asked you to type your question once again. मैंने आपको बोला है Nancy chat box में personal message करें. Please check your inbox. बाकी I'm trying to pick up the questions we are, and even Ruchi is reading out the ones. बाकी कुछ remaining होंगी तो I promise you towards the end we'll take up all questions. All right, guys, this is what it looks like for now. जो हम कर रहे हैं आज ये पंजाबी ब्राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. All right, so I'm going,
Another way to intensify this color is to add a little bit of darker color, which we will do. Right, for now I am going to do a smoky kajal, kyunki a liner, sorry. So for liner I am using this, I'm using MAC Smolder. This is a gel kajal. All I'm going to do is जब मैं इसको place कर रही हूँ, इसको मैं lash line पे बिल्कुल closer to my lash line. I'll start from the middle and I will place it as an eyeliner. Don't worry अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, because we are going to fix it with a shading brush. For now we are just applying it. So there's a question कि पंजाबी ब्राइड्स पे किस टाइप का आई मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है? which I just answered कि आज जो हम लुक कर रहे हैं, आप एक लुक तो आपको यही मिल जाएगा, राइट? कि आप ये लुक में कलर्स चेंज कर करके लगाते रहो. जैसे आप, मैंने आज मरून किया है, आप इसको ब्राउन कर सकते हो, आप इसको ब्लैक कर सकते हो, ब्लैक एंड गोल्ड का कॉन्ट्रास्ट हो गया डिपेंडिंग ऑन द आउटफिट. देन आपका ब्राउन हो गया, ग्रीन कर सकते हो अगर ज्वेलरी का कलर कुछ और होता, अनलेस समबडी वांट्स अ मोनोक्रोमैटिक लुक और वो ग्रीन पहन रहे हैं एंड दे वांट ग्रीन, सो यू कैन गो फॉर ग्रीन. सो यू चेंज द कलर बट टेक्निक इज द सेम, राइट? And then you can do soft smoky eye. It also depends on the eye shape of the person और किस तरीके की ज्वेलरी है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. और लुक डिसाइडिंग के लिए also we have a session wherein we'll be telling you how to pick certain looks, how to choose eye makeup for different eye shapes and outfits and all of that. Okay, so now I'm using a shader brush. इतना पतला दिखता है, ये रियल टेक्निक का है. ऐसा पतला सा है ये ब्रश. आपको ये PSC में भी मिल जाएगा और बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स में मिल जाएगा. ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं लिया है मैंने अभी, खाली है बिल्कुल. ऑल आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू इवन दिस थिंग आउट टू मेक श्योर कि बीच में कोई भी स्पॉट नहीं दिखे. और इसको ऊपर नहीं फैला रही हूँ, जहां लगाया है एग्जैक्टली उसी जगह पे मैं इसको. See the difference. Now this eye has the perfect black, this eye still has that kajal thing, right? So अभी मैं इसको भी ऐसे ही सेम कर रही हूँ. Okay, there are two questions that I can see. Rajni says, मैम hooded eyes पर भी लाइनर करेंगे? देखो बहुत ज्यादा हुडेड है तो आपको अगर स्किप करना है आप सिर्फ विंग आउट कर सकते हो, मत करो. और अगर बिल्कुल literally at the lash line, very very little if you want to do, you can even skip it by just using a small pencil brush like this to smoke out that lash line with the shadow, ब्लैक शैडो से. अगर आपको बिल्कुल कंप्लीटली स्किप करना है तो आप स्किप करो, लेकिन उनका आई पुल करके ये जो एरिया होता है यहाँ पे काजल लगाएंगे हम उनको बहुत बहुत अंदर जाके. हाउ डू आई एक्सप्लेन इट टू यू? आपको दिखाई दे रहा है अगर तो see that area टाइट लाइन जो करते हैं वहां पे काजल लगाएंगे आप, राइट? और साइड में छोटा सा विंग क्रिएट कर सकते हो चाहो तो. और राइट नाउ मेरा काजल बिल्कुल परफेक्टली मैंने लाइनर की उसमें जो टाइट लाइन होता है वहां पे. ठीक है, सो आई एम स्विचिंग माई ब्रश नाउ. पेंसिल ब्रश है मेरे पास, पेन ब्रश, पेंसिल ब्रश, जो भी आप इसको बुलाना चाहें. बहुत छोटा सा होता है, डेंस होते हैं इसके ब्रिसल्स. दिस इज PAC नंबर 092. ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग इज जो मैंने ब्लैक लगाया है उसके ऊपर सेम ब्लैक आई शेडो लेकर के उसको, अगर आपको इंटेंस करना है, कोई भी जेल या क्रीम प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं उसको सेट करना जरूरी होता है. सो आई एम टेकिंग कितना अमाउंट, जस्ट सी, एवरीबडी विल लीव एंड सी कितना अमाउंट यूज करी हूँ मैं ब्लैक का. आई होप एवरीबडी, आई थिंक Satarupa is not looking. I'm not happy about it. Okay, Anna is looking at me, right? Okay, there. Okay, everybody, I just touch my brush and I bring it. That's it. अगर आपने 10 किलो काजल ले लिया है, आई शेडो ले लिया है तो सब काला हो जाएगा. We are not going to do it. Just touch and be back and still look at me. I'm going to see at the back of my hand कि कितना काजल आया. See, this is the amount. It's like literally minimal. That's the amount you will take and you will put it all over the kajal to set it. We don't want a lot of black. Same thing for the other eye. I will just touch to the pan, tap off the excess and
set it. Sorry. बिल्कुल कर देंगे बलबीर जी. All right. Now I'm cleaning this brush and I'm going back to my red color, wine color, maroon color, जो भी आप इसको बुलाएंगे, सेम कलर जो मैंने अभी पहले कॉन्टूर किया था. निशी, इससे ना सेट हो जाएगा आपका काजल. जो आपने जेल या क्रीम, जो भी काजल आपने यूज किया है, क्रीम तो खैर करना नहीं है, जेल अगर आपने किया है, काजल क्रेयॉन किया है, कोई भी किया है, उससे पाउडर लगाने से वो सेट हो जाता है और थोड़ा इंटेंस हो जाता है कलर. Okay, is everyone ready to see the next thing? अगर आपकी अंशिका अग्रवाल, अगर आपके लिड पे काजल लग जाता है, इसका मतलब आप थिक लगा रहे हो काजल, जो आपको नहीं लगाना है. सो उसको हाफ कर दो. थिक मतलब चौड़ा कम लगाएंगे, जैसे मैंने चौड़ा लगाया ना, उसको और कम कर दोगे आप. हाफ करोगे तो लिड पे नहीं लगेगा. आप जिनकी ऐसी आईज होती है जिनका काजल ऊपर लग जाता है, फॉर देम ओपन योर आईज एंड देन सी आपको कितने एरिया में काजल लग सकता है आपका, उससे ऊपर ना जाए आप. ऑन माई पेंसिल ब्रश, पेन ब्रश, जो भी आप इसको बुलाएंगे, इसमें मैंने मरून कलर, जो मैंने इनिशियल फर्स्ट कलर लिया था, आई हैव टेकन दैट एंड आई एम गोइंग टू शेड इट ऑन माई ब्लैक आईलाइन. हाउ? हाफ एंड हाफ. याद रहेगा रूल, हाफ एंड हाफ. हाफ ऑन द लाइनर, हाफ ऑन माई स्किन. लेट्स स्टार्ट. आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, क्योंकि मिडल में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हम देते हैं कलर की, राइट? सो आई एम गोइंग टू प्लेस इट राइट हियर एंड आई एम गोइंग टू take it backward, पीछे की साइड, and then left over I will take towards the front. स्मोक मिला काजल को, देखो है ना, स्मोक लग रहा है ना. You want to increase the intensity, you do it again, one more coat. This, by the way, this is also my signature look that I usually do on brides. Okay, this is what it looks like for now. I'm going to do the same thing on my other eye. Tap off the excess, half and half. Half on your kajal, half on your skin. I took the same initial color, Shelly, जो मैंने contour के लिए use किया है ना, side V के लिए, वही वाला color. This is what it looks like, right? I'm just going to put this away. I'm sorry I had to switch my eyeshadow palette उस time पे, क्योंकि I didn't have red or maroon in that. All right, now जब हम see, first thing is placement of the eye color and then it is the blending. Okay, ये harsh lines दिख रही हैं आपको. Now I feel मुझे यहाँ पे intensity of the color बढ़ानी है. So I have already used my black shadow. I'm going to switch the brush. Sorry, brush switching बहुत है इसमें, क्योंकि जितने आपको detailed काम करने होते हैं, you need smaller and then थोड़ा bigger brush. इस पेन ब्रश के जैसा एक और ब्रश है, थोड़ा सा बड़ा है इससे. That's what I'm going to use. It doesn't have any number on it, but it is called a pen brush. I'm going to take a little bit of black on it, very little, like just touch it, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था. Touch it and be back and see at the back of your hand कि कितना color है. See, very minimum. And I'm going to start contouring the sides from my liner, dark color smoke, and then this. इसके बीच में यहाँ पे circular motion में I'm going to blend it. This is also the placement, by the way. This is not blending. Blending will come afterwards. Now here, it's just in the socket. जो आपका ये socket है, इसी में मैं डाल रही हूँ color को, और मैंने बहुत कम color लिया है. This is what it looks like for now. और ये वाला color देखो यहाँ पे कम है, ठीक है. कौन सा color लिया है मैंने? Black लिया. आप बिल्कुल dark देखो कौन कौन से color pick कर सकते हो आप. जो कलर आपने इनिशियली यूज किया था आप वो ले सकते हो चाहो तो. यू कैन टेक अ ब्लैक. दैट्स व्हाट आई टुक, बिकॉज ब्लैक से शेड बढ़ता है.
कलर थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होगा ब्लैक जिस चीज में भी ऐड कर दो थोड़ा सा तो वो शेड बन जाता है. सो दिस इज द शेड ऑफ रेड ओनली बट इट इज अ डार्कर वर्जन. द इंटेंसिटी इज मोर. यू कैन टेक दिस कलर. एनी डार्क कलर वुड डू. ब्लैक से शेड बनता है सो आई प्रेफर ब्लैक. मेरी आईज हुडेड है बट इतनी हुडेड नहीं है कि मैं लाइनर ना लगा पाऊं. बट मेरी आईज हुडेड है. यस. ओके अगेन मैंने सेम थिंग किया है. मैंने ब्लैक लिया है. बैक ऑफ द हैंड पे ट्राई कर लिया है कि बहुत ज्यादा नहीं ले लिया है. काजल लाइनर शैडो जो भी लेते हो ट्राई एट द बैक ऑफ योर हैंड. मेक श्योर यू डोंट टेक अ लॉट ऑफ इट. Again, from the corner, I am going to do it in circular motion. Blend it just in the socket. You see, I press it. This is the socket. Crease, जिसे बोलते हैं. So once you're happy with the color placement, look in the front and see that everything is एकदम बराबर दोनों में. कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया है. ठीक है. Now it's the time to blend everything. I will go back in my brush 229. Yes, I can. I will. ये मेरा नंबर 229 क्रीज ब्लेंडिंग ब्रश है. मैंने इस पे कोई कलर नहीं लिया है अभी. जैसा पड़ा था वैसा उठा लिया. हो सकता है इस पे लेफ्ट ओवर कलर हो थोड़ा सा जो मैंने इनिशियली यूज किया था. ठीक है. आई एम गोइंग टू गो ऑन माई कलर. दिस कलर डार्क कलर एंड लाइट कलर इसके बीच में मुझे ब्लेंड करना है. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ब्लेंडिंग to make sure everything looks well blended. Circular motion, holding it from 70% and going in. Just circular motion, making sure everything is getting well blended. Again, I'm going to do the same thing over here to blend everything in. Now is the real thing. सेम ब्रश पे मैंने ब्रश चेंज नहीं किया अभी तक. इसमें कुछ नहीं लगाया. खाली कुछ मैंने खाली लिया था शिम्पी. इस पे कोई कलर नहीं लिया था. अभी खाली कलर से खाली ब्रश से ब्लेंडिंग किया. अभी मुझे आउटवर्ड आप देख रहे हो. दिस इज अ हार्श लाइन. आई नीड टू गेट रिड ऑफ इट. सो आप अपने पैलेट में वापस जाओगे. यू विल पिक अप अ लाइटर शेड. आप एक ट्रांजिशन शेड जो होता है कुछ लोग पहले लगा लेते हैं. मैं बाद में करती हूँ सो दैट द लेयरिंग इज लेसर. नाउ दिस वाज द शेड दैट आई यूज्ड. आई एम गोइंग टू सी इससे लाइट कलर कौन सा है इसमें. लाइक दिस कलर कैन बी यूज्ड. ठीक है. फॉर माई फर्स्ट ट्रांजिशन जो मैं अभी कर रही हूँ इन कलर्स के बीच में. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस कलर. आई एम स्टेइंग इन द सेम कलर फैमिली. मरूनिश वाला ही है बट लाइटर कलर है. बहुत लाइट कलर है. आपको स्वॉच करके दिखाती हूँ दोनों कलर. ये कलर है जो मैं अब लगाने जा रही हूँ. ये कलर है जो मैंने पहले लगाया था. सेम फैमिली से है बट इंटेंसिटी ज्यादा और कम है बस. ठीक है. सो दिस इज द कलर जो अब मैं ट्रांजिशन के लिए यूज कर रही हूँ. इट्स ऑलरेडी देयर ऑन माई ब्रश. आई एम गोइंग टू टैप ऑफ द एक्सेस. हाफ एंड हाफ. नो द रूल. हाफ कलर पे हाफ स्किन पे चलेगा. आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट रहेगा. 70% पे ब्रश पकड़ेंगे. आई विल स्टार्ट एंड आई विल ब्लेंड एवरीथिंग इन. यहां तक. This is what it looks like for now. ठीक है. Now I'm going to do the same thing on my other eye, taking off the excess and then half and half पे. Half on the color, half on the skin. Blend it well. Always start from the back because you don't want a lot of color towards the front of the eye. And trust the process. Don't worry. वो कभी कभी ऐसा दिखता है कि यार ये क्या ही करे जा रही है. But when you'll see the end result, you'll be happy. Okay. All right. My next brush. Switching the brush when you're doing detail work. आपको बहुत सारे काम, बहुत सारे brushes चाहिए होते हैं. आप same brush को multi use कर सकते हो clean कर से करके. Okay, my last brush for this eye for now is this brush. This is a very fluffy brush. It's brush number 126 from PAC. बहुत fluffy है. इसमें color pick भी बहुत हल्का होता है, कम होता है. आप ज्यादा खराब भी नहीं कर सकते अपनी आईज को. और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होती है. राइट. क्योंकि हमें लास्ट कलर जो है मुझे मिनिमम बहुत बहुत कम चाहिए. आई डोंट वांट अ लॉट ऑफ कलर. सो लास्ट कलर में आई एम गोइंग टू यूज अ कलर विच इज जस्ट लाइक माई स्किन. अ लॉट लाइक माई स्किन. राइट. दिस कलर अर्दी कलर टाइप लग रहा है. कुछ मेरे स्किन जैसा ही दिख रहा है. इफ यू नोटिस. सो आई एम गोइंग टू डिप माई ब्रश इन दैट.
taking off the excess, removing the excess from the brush, and now half and half again. See that? It's just going to diffuse that harsh line here. Brush number is PAC 126. Okay, and I'm going to